Hello students, topic for today's lecture is multimedia file formats. For this particular class, the content for the lecture will be what is file format, categories of files, types of file formatting, image file format, audio file format, and then we will discuss video and text file formats. Now, important question is what is file format? A file format is the structure of how information is stored or encoded in a computer file. A file format specifies how bits are used to encode information in a digital storage medium. फाइल फॉर्मेट बेसिकली क्या है? फाइल फॉर्मेट एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जिसमें हम अपनी इंफॉर्मेशन को बिट्स के रूप में स्टोर कर सकते हैं इन डिजिटल स्टोरेज मीडियम। मेनली जब हम कोई भी फाइल स्टोर कर रहे हैं, जब भी कोई डेटा स्टोर कर रहे हैं, डेटा की डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं। डेटा कैन बी इमेज डेटा, इट कैन बी ऑडियो डेटा, इट कैन बी टेक्स्ट इंफॉर्मेशन, इट कैन बी वीडियो. For all these different categories of data or information or elements of multimedia, we are using different file formats. For images, we are using image file format. Audio will be stored using audio file format. Text will be stored using text file format. And video will be stored using video file formats. Like if we want to store a image file format, for image, what we need to do, we need to store image in the form of image file format. For image format, we need to specifically design some file formats to store specific type of information which is image in this example. हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हम image type के data को store करना चाहते हैं तो हमें image file format design करना पड़ेगा जो specifically image type के data को store करे। जैसे कि we are using well-known image file format is JPEG. We are using JPEG as a file format for image, TIFF. Or we are using Adobe Illustrator for vector data, or for document exchange we are using PDF. Now we have different categories of files. Mainly we have three categories of files: uncompressed files, lossless files, and loosey files. Uncompressed files are the files that are not compressed and are capable of having a larger file size. Uncompressed files वो files होती हैं जो अपने ओरिजिनल फॉर्म में होती हैं, जिनको हमने कंप्रेस नहीं किया होता, और ये फाइल्स लार्ज साइज में होती हैं बिकॉज हमने इन फाइल को कंप्रेस नहीं किया हुआ है। फर्दर हम अपनी जो फाइल्स हैं, जो हमारी ओरिजिनल फाइल्स हैं या हमारा जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन और डेटा है, उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं। जब हम कंप्रेस करते हैं अपनी फाइल को तो जो हमारी फाइल का साइज है वो साइज क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है, और इन फाइल्स को हम कंप्रेस्ड फाइल्स कहते हैं। कंप्रेस्ड फाइल्स की दो कैटेगरीज है, लॉसलेस फाइल्स एंड लूजी फाइल्स। अगर मैं कह रही हूँ लूजी फाइल्स, तो लूजी फाइल्स आर दोज फाइल्स दैट आर कंप्रेस्ड बट डज नॉट लूज एनी क्वालिटी टू द फाइल। कहने का मतलब ये है कि लॉसलेस फाइल्स वो फाइल्स हैं जिनको हमने कंप्रेस किया, बट कंप्रेस करने के बाद जो आपकी फाइल की क्वालिटी थी वो एज इट इज मेंटेन रही। उन फाइल्स को हम कहते हैं लॉसलेस फाइल्स। Loosey files are those files that lose some quality when being compressed. तो लूजी फाइल्स ऐसी फाइल्स हैं जब हमने इनको कंप्रेस किया, इनका साइज तो रिड्यूस हुआ ही, फ्रॉम लार्जर फाइल साइज दे गेट कन्वर्टेड टू स्मॉलर फाइल साइज। इनका साइज तो रिड्यूस हुआ ही, साथ में जो फाइल की क्वालिटी थी वो कुछ क्वालिटी भी साथ में डिग्रेड हो गई। So again I am repeating, we have three categories of files: uncompressed files, lossless files, and loosey files. Further, if we want to store any type of data, we need to use file formatting as we discussed in the first slide. We have different types of file formatting, and for this particular lecture we will discuss four types of file formattings. First is image file formatting,
audio file formatting, video file formatting, and text file format. So first we will discuss what is image file format. Image file formats are standardized means of organizing and storing digital images. Image files are composed of digital data in one of these formats that can be rasterized for use on a computer display or printer. Image formats being different way to overcome the problem of delivering an image with reduced file size and minimum download time. अब most commonly जो हम file format use करते हैं that is image. We are using image for printing, scanning. We are using images on internet in different file formats of image. इमेज बेसिकली क्या है? इमेज जो फाइल फॉर्मेट है वो एक स्टैंडर्ड वे है डिजिटल इमेज को, डिजिटल डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए और स्टोर करने के लिए. मेनली इमेज फॉर्मेट बेसिकली डिफरेंट वेज में हम इसको कह लो डिफरेंट फॉर्मेट्स हम यूज कर सकते हैं. और इसके साथ जो प्रॉब्लम हमारी थी डिलीवरी ऑफ इमेज करने की, कि जब हम इमेज को ट्रांसफर कर रहे हैं ओवर द इंटरनेट तो समटाइम हमें प्रॉब्लम आ रही थी. तो जब हम प्रॉपर इमेज फाइल फॉर्मेट यूज करते हैं तो ये प्रॉब्लम रिड्यूस हो जाती है. और जब हम डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स को यूज करते हैं तो फाइल का जो साइज है, इमेज फाइल का साइज है, वो रिड्यूस हो जाता है. इससे क्या होता है, आपको शेयरिंग करने में इजी रहता है इमेज फाइल को. और जब आप इमेज को डाउनलोड कर रहे हैं तो विद मिनिमम डाउनलोड टाइम आप इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं. मोस्ट कॉमनली यूज्ड इमेज फॉर्मेट्स आर TIF, JPEG, GIF, PNG and RAW. These file formats refer to different color data modes and having different ranges of bit pixel, which in turn determine the quality of the image. अब जब हम different image file formats को use कर रहे हैं तो basically इनमें color modes का different है कि ये किस तरह की color mode schemes use कर रहे हैं, RGB use कर रहे हैं, कितने bit data को support कर रहे हैं, 24 bits को support कर रहे हैं, 48 bit को support कर रहे हैं. आपकी इमेज जो है वो ग्रे स्केल इमेज है, RGB इमेज है, कंप्रेशन मोड कौन सा फॉलो कर रहे हैं, लॉसलेस कंप्रेशन है, लूजी कंप्रेशन है, और आपकी फाइल अनकंप्रेस्ड फॉर्म में है, कितनी बिट्स पर पिक्सल होंगी. तो इससे आपकी क्वालिटी ऑफ इमेज का पता लगता है. Accordingly, due to this difference in number of bits per pixel, each format is suited to a particular use depending upon quality and data space requirement. Main जो हमारे different image file formats है उनमें ये difference है कि हर image file format different number of bits per pixel को support करता है, इसीलिए इनकी quality में फर्क पड़ता है और इनकी जो requirement है वो different requirements है. Further, we have different types of image formats. We have TIFF, which stands for Tag Image File Format, PNG, Portable Network Graphics, JPEG, Joint Photographic Experts Group, and GIF, Graphic Interchange Format. So we will discuss these image file formats one by one. First, we will start with TIFF. TIFF stands for Tag Image File Format. This file extension is widely used image standard and is most commonly used for archiving images. Due to this, it finds more use in professional fields where important images and pictures are to be used, stored on servers on web pages. Mainly जो हम TIFF यूज कर रहे हैं, TIFF, ये हम आर्चिविंग पर्पस के लिए यूज करते हैं. आर्चिविंग कहने का मतलब है जब हमें डेटाबेस बनाना है इमेजेस का, क्योंकि ये 46 बिट्स ऑफ डेटा को सपोर्ट कर रहा है तो क्वालिटी ऑफ इमेज जो है वो बहुत अच्छी है, इसीलिए वी आर यूजिंग TIFF इमेज फाइल फॉर्मेट फॉर आर्चिविंग इमेजेस. लाइक व्हेन वी हैव टू स्टोर द इमेजेस ऑन वेब सर्वर्स और वेब पेजेस, or we have to create archives of historical monuments, then we are using this particular file format. This particular file format supports 46 bit of data. That means the quality of the image will be very high. Its name suggests
It contains tags which declare what type of data is included in it. This makes it compatible with all operating systems and programming languages. Works on all operating systems such as Windows, Unix, and Mac. Thus, an image can be easily used across different operating systems. TIFF it is supported by all operating system. ये जो फाइल फॉर्मेट है ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स में वर्क करता है, विंडोज, यूनिक्स, मैक में. अगर आप TIFF फॉर्मेट में इमेज को शेयर कर रहे हैं तो इजीली ये शेयर हो जाएगा और इजीली कोई भी यूजर जो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा है वो इसको डाउनलोड करके देख सकता है. Next is JPEG. JPEG stands for Joint Photographic Experts Group. This format is most commonly used for small photo images such as for websites and emails. This is one of the smallest file format, compresses data to approximately 1/10 of its size. So ये जो फाइल फॉर्मेट है JPEG ये हम बेसिकली यूज करते हैं जब हमें स्मॉल फोटो इमेजेस चाहिए, बिकॉज जब हमने वेबसाइट्स पे या ईमेल्स पे अपनी फोटो शेयर करनी है, वेबसाइट्स पे इमेजेस को डिस्प्ले कराना है, तो हम चाहते हैं कि इमेज का जो साइज हो वो बहुत छोटा हो ताकि आपकी जो इमेज है वो इजीली डिस्प्ले हो जाए. जब आप कोई भी वेबसाइट ओपन कर रहे हैं तो इजीली आपकी वेबसाइट पे आपकी इमेज डिस्प्ले हो जाए. तो JPEG फॉर्मेट जो है वो स्मॉल फोटो इमेज फॉर्मेट है, क्योंकि जब हमने वेबसाइट्स पे और ईमेल्स पे अपने डेटा को इमेज को शेयर करना है तो हम इजीली उसको शेयर कर सकते हैं. दिस इज द स्मॉलेस्ट फाइल फॉर्मेट अमंग ऑल द इमेज फाइल फॉर्मेट्स. ये सबसे स्मॉलेस्ट फाइल फॉर्मेट है जितने भी हम डिस्कस करेंगे फाइल फॉर्मेट्स उनमें से, और ये डेटा को 1/10 ऑफ इट्स साइज तक कंप्रेस कर सकता है. Suitable to use across low data speed internet, uses loosey compression technique. अगर हम कह लो कि हमारे पास लो इंटरनेट स्पीड डेटा है तो भी हम JPEG इमेज को इजीली डाउनलोड कर सकते हैं या फिर अपलोड कर सकते हैं अगर हमें किसी को ईमेल सेंड करनी है. दिस फाइल फॉर्मेट यूजेस लूजी कंप्रेशन टेक्निक. लूजी कंप्रेशन टेक्निक आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था. वन टेक्निक इज लॉसलेस, अदर इज लूजी. कि जब आप डेटा को कंप्रेस कर रहे हैं तो थोड़ी सी क्वालिटी जो है आपके डेटा की वो रिड्यूस होती है. इट सपोर्ट्स 24-bit colors. That means this particular file format will able to display all the colors the human eye can see because it supports 24-bit colors. It is supported by all browsers. आप कोई भी ब्राउजर यूज कर रहे हैं JPEG फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं. It is suitable for photographs, smaller size as compared to GIF. This file has smaller size as compared to GIF. Due to this, the quality of image is compromised and it cannot be recovered. Because of its smaller size, जो आपकी image की quality है वो compromise हो जाती है. And modern day digital camera memory card uses this format. For this particular format, the extension for your image file will be JPG or JPEG. Next file format is PNG. PNG stands for Portable Network Graphics. It's a file format that supports lossless data compression. That means if you want to compress this particular file, no data will be lost or quality of the image will be maintained as it is. This format was designed for the format of transferring images on the internet and not for the professional quality print graphics. ये जो पर्टिकुलर फॉर्मेट है ये डिज़ाइन किया गया था ताकि हम इजीली अपनी इमेजेस को बेटर क्वालिटी के साथ ट्रांसफ़र कर सकें ओवर द इंटरनेट. इट इज़ सूटेबल फॉर टेक्स्ट एंड आइकन्स. अगर आप आइकन डिज़ाइन करना चाहते हैं, टेक्स्ट डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं तो आप पर्टिकुलर PNG फाइल फॉर्मेट को यूज़ कर सकते हैं. Smaller file size as compared to GIF and JPEG. Extension for this particular file format is .png. Advantages is it can be easily portability across platform. No loss of information as this particular format is lossless data compression file format and can be compressed efficiently. Next file format is GIF.
GIF stands for Graphics Interchange Format. This is a bitmap image format which supports lossless compression, thus enabling a reduced file size without affecting the quality of the image. Due to this, it has become that largely used format across the internet. GIF is a bitmap image format जो कि lossless compression को follow करता है. अगर मैं कह रही हूँ लॉसलेस कंप्रेशन, दोबारा मैं रिपीट करना चाहती हूँ, लॉसलेस कंप्रेशन कहने का मतलब है कि आपका फाइल का साइज रिड्यूस होगा बट आपकी इमेज क्वालिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा. दिस फॉर्मेट इज सूटेबल or used for graphic images such as logos, animations and low resolution video clips. GIF को हम यूज करते हैं लोगो डिजाइन करने के लिए, एनिमेशंस बनाने के लिए और लो रेजोल्यूशन की वीडियो क्लिप्स बनाने के लिए. GIF एज अ फाइल फॉर्मेट ऑडियो को सपोर्ट नहीं करता है. This is most widely used format across social media application these days. Not ideal for storing digital photos as it makes the picture rough and grainy. ये जो फाइल फॉर्मेट है हम बेसिकली आजकल यूज कर रहे हैं सोशल मीडिया एप्लीकेशंस पे. आपने अपने व्हाट्सएप पे भी देखा होगा, व्हाट्सएप इज आल्सो गिविंग द ऑप्शन ऑफ GIF. जब आप किसी को मैसेज का रिप्लाई करना चाहते हैं तो आप जहाँ पे आपके कह लो कि आइकन्स आते हैं वहां पे आप GIF भी, जो भी आपकी ट्रेंडिंग या सैड या लव और रिएक्शन और एनी टाइप ऑफ रिएक्शन यू वांट टू गिव, वहां पे आप GIF एज अ रिएक्शन या फिर एज अ मैसेज भी आप सेंड कर सकते हैं. मोस्टली यूज फॉर बटन्स, टेक्स्ट, आर्टवर्क, icons and banners on websites. It supports 8-bit colors. It is supported by all browsers. File of the size will be large file size. GIF is a large file size and extension for this particular file format is .gif. Next is audio file formats. Now what is audio? Audio is an electrical or other representation of sound. An audio file format is a file format for storing digital audio data on a computer system. ऑडियो फाइल फॉर्मेट की हेल्प से हम कोई भी डिजिटल डेटा अपने कंप्यूटर सिस्टम पे सेव कर सकते हैं. दिस डेटा कैन बी स्टोर्ड एज अनकम्प्रेस्ड और compressed due to the file size, to reduce file size. Now जो आपका ऑडियो फाइल फॉर्मेट है उसको आप अनकम्प्रेस्ड फाइल फॉर्मेट में भी स्टोर कर सकते हैं. दैट मीन्स एज अ ओरिजिनल फाइल भी स्टोर कर सकते हैं और उसको कंप्रेस भी कर सकते हैं. जब आप अपने डेटा को ऑडियो फाइल फॉर्मेट को कंप्रेस करेंगे तो जो फाइल का साइज है वो रिड्यूस हो जाएगा. It can be a raw bit stream, but it is usually a container format or an audio data format with defined storage layer. Now, first audio file format is MIDI. MIDI stands for Musical Instrument Digital Interface. These files are very small but are not compressed files. These files uses file extension as .mid or .midi. A MIDI file is not a recording of music being played. It's a description of how to create the sound based on predefined sounds like 6-string guitar और pipe organ. ये बेसिकली ये जो फाइल्स हैं इसमें ह्यूमन वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं होती है, ये प्रीडिफाइंड साउंड्स रिकॉर्डिंग होती है. A MIDI file recording never contain the human voice because it store the recording of the instruments, musical instruments. A 10 KB MIDI file could easily hold more than a minute of music. As we already discussed that these files are very small in size, so a 10 KB file will easily hold 1 minute of music. This format is a set of digital instructions that can be interpreted by the sound card of any computerized system. This format is used for sharing music information across electronic music devices. Mostly used to control musical instruments, it is a very small size audio format and thus
cannot be used to record sounds. It can only store tunes and not songs. MIDI file format, as we already know that this file format is very small in size, so ये जो file format है ये सिर्फ tunes को store करता है, musical instrument की tunes को store करता है, ये songs को store नहीं करता है. Next audio file format is WAV. WAV stands for Resource Interchange File Format Waveform. This is uncompressed audio format. The extension for this file format is .wav. This format is proprietary format that was sponsored jointly by Microsoft and IBM. That means IBM and Microsoft ने combinedly इनको इस format को मिलके बनाया था. ये जो format है ये monoaural and stereo audios दोनों को support करता है. It is supported by all computers running Windows and by all the most popular web browsers. 1 minute of stereo music takes up approximately 10 MB of storage space. मतलब 10 MB की फाइल में आपको 1 मिनट का stereo music मिल सकता है. That is the size of this particular file format. Next file format is AIFF. AIFF stands for Audio Interchange File Format. This file format is native audio file format developed by Apple for particularly Macintosh computer platform for storing compressed audio files, CD quality sound similar to WAV files for Windows-based PC. This file is uncompressed and lossless audio format. This means that it is much larger in file size than MP3 but can support the highest possible audio recording quality as well as lower quality setting. AIFF can support music from the highest quality recording through to lower quality recording. That means size can be, quality of music can be very high or it can be very low. This particular file format follow the file extension as .aif or .aiff. Next file format is MP3 format, and we all know that this is the most commonly used audio file format. MP3 file format was developed by Moving Pictures Experts Group. And this file format is lossless data compression. It uses the file extension as .mp3. It stores digital music, podcasts, and audiobooks are often saved as MP3 files or MPEG-3 files. This format is an audio part of MPEG video file format and is most commonly used for music recording. It compresses a sound sequence into a very small file size while preserving sound quality, and thus this format is widely used for storing music on websites. जैसे कि हम सबको पता है कि MP3 फाइल फॉर्मेट जो है ऑडियो फाइल फॉर्मेट वो हम मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं जब भी आप कह लो किसी म्यूजिक वेबसाइट से आपको गाना डाउनलोड करना होता है, ऑडियो फाइल डाउनलोड करनी है आपको किसी सॉन्ग की, दैट सॉन्ग will be available in MP3 format. Reason is ये जो फाइल है ये बहुत स्मॉल साइज की है. स्मॉल साइज के होने के बावजूद भी ये साउंड की क्वालिटी को प्रिजर्व रखती है, and that's why we are using this format for storing music on websites. 1 minute of music takes approximately 1 MB of storage space. Means 1 मिनट का जो म्यूजिक है उसकी फाइल साइज होगी 1 MB. Next audio file format is WMA. WMA stands for Window Media Audio. This file format uses loss compression developed by Microsoft and is widely recognized by a variety of players, music players and jukeboxes like Winamp and Music Match. WMA uses file extension as .wma. These files can be of any size compressed to match any different connection speed or bandwidth. It is a non-proprietary MP3 format for saving and storing music files.
Next audio file format is AAC. AAC stands for Advanced Audio Coding. It is developed to improve upon MP3 audio format and used a more advanced form of compression. AAC को बेसिकली डेवलप किया गया था कि जो कमियां थी MP3 ऑडियो फॉर्मेट में उनको इम्प्रूव करने के लिए एक न्यू फॉर्मेट लेके आया गया दैट इज AAC और ये एडवांस फॉर्म ऑफ कंप्रेशंस को यूज करता है अकॉर्डिंग टू सम लिसनिंग टेस्ट देखो MP3 फाइल में और AAC फाइल दोनों में कुछ लिसनिंग टेस्ट परफॉर्म किए और जो AAC फाइल की एनकोडेड फाइल थी AAC file encoded at lower bit rates like 96 kbps sound as good as or as better than MP3. Like MP3 encoded at higher bit rate like 128 kbps despite their smaller size. Versions of AAC are used by Apple in their popular iTunes store as well as by Sony in their PlayStation games console. तो AAC जो फाइल फॉर्मेट है वो इतना बढ़िया एनकोडेड लोअर बिट रेट पे प्रोवाइड कर रहा था कि एप्पल आईट्यून स्टोर पे और जो सोनी है उसके जो प्ले स्टेशन गेमिंग कंसोल्स आते हैं उनमें AAC फाइल फॉर्मेट को यूज करता है AAC file format uses file extension as .m4a or .mp4. जो आपके iTunes के सॉन्ग्स हैं वो आपके AAC ऑडियो फाइल फॉर्मेट को यूज करके स्टोर होते हैं और iTunes स्टोर पे यूजुअली हम एक्सटेंशन यूज करते हैं दैट इज .m4p where p stands for that this particular file is protected. P denotes the protected mode for iTunes Store music. Next audio file format is OGG. OGG is a compressed audio file that uses free, unpatented OGG Vorbis audio compression. The term Vorbis refers to a specific encoding scheme provided by Zific.org, the developers of OGG. It is similar to an MP3 file, but it sounds better than MP3 file of equal size. It also include metadata of the song. What is metadata of the song means artist information, track data information, date of release, and all the information related to the song. OGG files are supported by many software music players and some portable music players. Next is video file formats. Video files are actually collections of images, audio, and other data. We are using different attributes for video signals that includes pixel dimension, frame rate, audio channels, and many other. Basically, we are using two different video file formats. First is analog and other is digital. Analog is actually continuous waveform or record. Analog video represents moving visual images with analog signal. That means they follow analog signals or continuous waveform. Digital file formats is basically digital recording is composed of discrete bits of data which are represented by values of zeros and one. Digital video is an electronic representation of moving visual images in the form of encoded digital data. The first video file format is MPEG. MPEG stands for Moving Picture Experts Group. This is the most commonly used file format for digital videos and movies. MPEG files uses file extension as .mpg or .mpeg. The latest MPG version is MPEG4, which uses the file extension as .mp4. MP4 file format is greatest file sharing format for the web. अगर आप इंटरनेट पे वेब पे अगर आप वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो दिस इज द मोस्ट सपोर्टिव और supported by all the web browsers
This is the most used or most commonly used file format on the internet. MP4 file sizes are relatively small, but the quality remains high even after compression. अगर आप MPEG या MP4 फाइल को कंप्रेस भी करेंगे तो क्वालिटी विल रिमेन सेम, और इस फाइल का जो साइज होता है वो रिलेटिवली स्मॉल होता है. इट इज कंपैटिबल विद बोथ ऑनलाइन एंड मोबाइल ब्राउजर. आप किसी भी ब्राउजर के साथ, आपके वेब ब्राउजर्स हैं और मोबाइल ब्राउजर्स हैं, MPEG files are supported by all type of browsers, and it is also supported by HTML5. Next video format is MOV, Apple QuickTime Movie. This particular file format was developed by Apple. The QuickTime file format is a popular type of video sharing and viewing format amongst Macintosh user or Mac users, and is often used on the web and for saving movie and video files. In recent years, Apple come up with a newer version called QuickTime X, currently available on Mac operating system X, Snow Leopard, Lion, and Mountain Lion. MOV files are most commonly opened via the Apple QuickTime Player for Mac operating system. MOV files are not just limited to being played on Apple computer, as there is a free version of QuickTime Player available for the Windows operating system among many other players. Considered one of the best looking file format, MOV files are of high quality and are usually big in file size. Next video file format is AVI. AVI stands for Audio Video Interleaved. This particular file format is developed by Microsoft and introduced to the public in November 1992 as part of its video for Windows technology. The AVI format is one of the oldest video format. It is the nominal standard for personal computers using Windows. It is universally accepted that many people consider it as the de facto standard for storing video and audio information on the computer. AVI जो है ये बेसिकली फाइल फॉर्मेट माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया था और ये इंट्रोड्यूस हुआ था फॉर पब्लिक इन 1992 नवंबर. और कुछ लोग इस पर्टिकुलर फाइल फॉर्मेट को द डी फैक्टो स्टैंडर्ड मींस बेसिक ऑफ वीडियो फाइल फॉर्मेट भी कंसीडर करते हैं because of its simple architecture. AVI files are able to run on number of different systems like Windows, Macintosh, Linux, and it is supported by all web browsers. Next video file format is WMV. WMV stands for Windows Media Video. This file format is developed by Microsoft. WMV was originally designed for web streaming application as a competitor to Real Video, but it can now cater to more specified content. WMV files are the tiniest window files over the web, as their file size decreases significantly after compression, which results in poor video quality. One of the advantage of this particular file is that the only video format that allow user to upload and share their video through email system. Like अगर आपको email के through कोई भी video share करनी है तो आप WMV file format use करके अपनी video को share कर सकते हैं. And for this particular file format, the window media player is the main application जिस पे आप WMV files को play कर सकते हैं. Microsoft की जितने भी Windows operating system है सब पे WMV support करता है और this is supported by mainly all the web browsers also. And this particular audio file format is also supported by Macintosh operating system. Next video file format is Real Video. Real Video is a proprietary file format. It uses file extensions as .rm, .ram, and .ra. It is used mainly for real-time streaming of audios and videos.
इट रिक्वायर्स रियल प्लेयर सॉफ्टवेयर। अगर आप रियल वीडियो को यूज करना चाहते हैं तो रियल प्लेयर आपके पास होना चाहिए। और ये जो पर्टिकुलर फाइल फॉर्मेट है, अगर आपको रियल टाइम स्ट्रीमिंग करनी हो ऑडियो और वीडियो की, उसके लिए भी हम मेनली रियल वीडियो फाइल फॉर्मेट को यूज करते हैं। नेक्स्ट फाइल फॉर्मेट इज SWF. SWF originally stands for Shockwave Flash, but now the abbreviation has changed to Small Web Format. This file format uses file extension as .swf. It is format for multimedia files. If you want to save multimedia file, then you can save your multimedia file with .swf file extension for vector graphics and action script in Adobe Flash environment. It contains animations or applets also. And this particular function, SWF function, are the dominant format for displaying animated vector graphics on the web. अगर आपको animation display करनी है on the web, so this is the most suitable Windows file format. Next Windows file format is DIVX. DIVX was developed by DIVX Corporation, and to compress a great deal of video content into relatively small files and still retain reasonably good image quality when played back. This particular file format is based upon MPEG-4 and is popular choice for sending videos files over the internet. Next file format is QuickTime. QuickTime file format we are using for storing and playing movies with sound. It is developed and supported by Apple. This flexible format is not limited to a Macintosh operating system only. It is also used in Windows operating system and other types of computing platforms. QuickTime files usually appear with .mov file extension. Next type of file format is text file format. Files in the text file format are the files in which the bytes represent the text characters of a particular character set using a specific system to relate the binary numbers in the file to the text characters of the set. The text file format includes a number of different formatting strategies for text files in which data fields are structured in a regular pattern. अगर आपको text save करना है, text character save करने हैं in a particular format, तो हम text file format use करते हैं. Most of these formats represents row of data on different lines of the files using different strategies to separated data values within each row. Fixed width formats place each data entry in a separate column and therefore limit the size of data entries. जब हम डेटा को सेव कर रहे हैं अपनी टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट्स में, तो वो जो फाइल फॉर्मेट्स कोई डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स है, कुछ फाइल फॉर्मेट्स रोज ऑफ डेटा क्रिएट करते हैं, लाइंस ऑफ फाइल क्रिएट करते हैं, कुछ फिक्स्ड विड्थ फॉर्मेट यूज कर रहे हैं, कुछ सेपरेटेड फॉर्मेट यूज कर रहे हैं. फिक्स्ड विड्थ में बेसिकली क्या है, जो हर एक डेटा एंट्री है वो सेपरेट कॉलम में एंटर होती है ताकि हम साइज को लिमिट कर सकें. सेपरेटेड फॉर्मेट में हम स्पेशल कैरेक्टर यूज करते हैं अपनी डेटा एंट्री को सेपरेट करने के लिए, लाइक स्पेस और कॉमा और टैब. तो ये सब चीजें यूज करके हम अपनी डेटा एंट्रीज को सेपरेट कर सकते हैं. फर्स्ट फाइल फॉर टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट इज doc, doc or docx. This file format is used by Microsoft Word. Microsoft Word is a word processing software which saves document using .doc file extension or .docx file extension. These files contain special formatting codes that identify how the text will look. जैसे जब हम वर्ड यूज करते हैं, हम डिफरेंट फॉर्मेटिंग स्कीम्स फॉलो कर सकते हैं, अपने डेटा को टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, डिफरेंट कलर्स दे सकते हैं, अपने पेज लेआउट को चेंज कर सकते हैं, मार्जिन्स दे सकते हैं, इंडेंटेशन दे सकते हैं, पेजिंग कर सकते हैं हम. तो डिफरेंट
सपोर्टिंग फाइल फॉर्मेटिंग कोड्स भी doc और docx फॉलो करता है, एंड दिस फाइल फॉर्मेट वाज सुपरसेडेड in Word 2007 with .docx फाइल एक्सटेंशन. Microsoft Word 2007 तक जो फाइल एक्सटेंशन थी वो .doc थी, बट उसके बाद जितने भी Microsoft Word की एक्सटेंशन आए हैं उसमें फाइल एक्सटेंशन चेंज होके .docx हो गई है. .docx फाइल्स जो है वो XML भी इनकॉर्पोरेट करती हैं, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज कोडिंग रूल्स फॉलो करके डॉक्यूमेंट को इंटीग्रेट किया जाता है विद इंटरनेट एप्लीकेशंस. As a result, earlier version of Word cannot read docx document, but Microsoft does provide software that converts document into docx format. जैसे कि हमने अभी बात करी है कि जो 2007 के बाद वर्जन आया था उसकी फाइल एक्सटेंशन .docx हो गई थी, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड करी है कि हम .doc डॉक्यूमेंट्स को .docx फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सके. Word 2007 can read doc document and is able to save new document in a doc format when save using the save as option. अगर आप सेव एज ऑप्शन यूज करके अपनी फाइल को सेव करते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन आ जाते हैं कि आप डीओसी प्रीवियस वर्जन विंडोज 2007 के साथ सेव करना चाहते हैं अपनी फाइल को, या फिर न्यू वर्जन .docx के साथ सेव करना चाहते हैं. अगर आप सेव एज ऑप्शन यूज करके अपनी फाइल सेव करते हैं तो आइदर यू कैन सेव योर फाइल एज .doc or with .docx by using the specified option. Next text file format is RTF. RTF stands for Rich Text Format. RTF documents are designed to transfer documents between word processing software. आप जो माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्ड पैड यूज कर रहे हैं एज अ वर्ड प्रोसेसर, वो बेसिकली जो फाइल एक्सटेंशन है वो RTF फाइल एक्सटेंशन को यूज करता है, एंड RTF फाइल यूजेस फाइल एक्सटेंशन एज .rtf. While the text formatting options are as rich as those used by Word, RTF files have limited page layout option. Difference क्या है Microsoft Word और आपके WordPad में कि जो rich text format file है इसमें limited page layout options हैं as compared to Microsoft Word. For example, you can't create columns, add page numbers, headers or footers in case of WordPad or RTF files. The WordPad word processor included with Windows defaults to create RTF documents. जो आपके पास Windows में WordPad word processor है उसकी जितनी भी files create होती हैं वो .rtf extension के साथ होती हैं. These files are RTF documents. Next file format is txt. txt documents only contain text. इस फाइल में सिर्फ टेक्स्ट होता है. Any computer can read txt file, but only thing is it does not look much pretty as these files don't have any formatting option. Notepad जो हम यूज कर रहे हैं Microsoft ऑपरेटिंग सिस्टम में उसमें बेसिकली आप जो टेक्स्ट एडिटर यूज कर रहे हैं एज अ नोटपैड, उससे हम जो फाइल्स क्रिएट करते हैं वो txt फाइल्स होती है या फिर txt डॉक्यूमेंट्स होते हैं. द इंडिविजुअल कैरेक्टर्स इन द डॉक्यूमेंट, letters, punctuation, new lines, etc. are each encoded into bytes using ASCII encoding or UTF-8 or ISO 88591, particularly if the document is not in English and stored in a simple sequence. अगर आपको simple text file create करनी है तो आप notepad option use कर सकते हैं because it only stores the text itself with no information about formatting, font, page size, any other option like bold, italic, other thing. It is portable across all computer systems and can be read and modified by huge range of software applications. The detail of format are freely available and standardized. If the storage media are damaged, any undamaged section can be recovered without problem. Next text file format is HTML.
HTML stands for Hypertext Markup Language. It uses .htm or .html file extensions. HTML files contain codes that browsers like Internet Explorer और सफारी ट्रांसलेट इनटू वेब पेजेस. जब आप HTML फाइल में जो भी आप टेक्स्ट लिख रहे हैं वो जब कन्वर्ट होगा वो ऐसे कोड में कन्वर्ट हो जाता है जो वेब पेजेस पे ओपन होता है. जो भी आपने कोडिंग करी है वो एज अ वेब पेज आपको शो होती है. द टेक्स्ट प्लस सिंपल फॉर्मेटिंग इज स्टोर्ड इन अ सिंपल एनकोडिंग that is based on the plain text file format above with plain text markup interspersed with the text. This format is freely available and is controlled by public interest standards body. The document can be viewed in any web browser. It can be edited in a text editor by someone who knows HTML or any rich text editor like word processor, HTML editor and so on. Next file is PDF. PDF stands for Portable Document Format. This file uses .pdf file extension. These files are created using a software package from Adobe called Acrobat. This software must be purchased and converts files created by softwares like Microsoft Word into read-only PDF file. In this format case, the text plus formatting, page size, and similar information are stored in moderately complex encoding. While the details of this encoding are freely available, the format is owned by Adobe and can be changed by them at any time for any reason. The document can be viewed and printed on all major platforms using free software provided by Adobe. So for today's lecture, we discussed different file formatting. We discussed audio file format, image file format, video file format, and text file format. So thank you so much, students. Keep following, keep listening.